you need to remember the value of mole. 1 mole equals to 6.022 into 10 power 23. You need to remember 1 AMU is equals to 1/12 the mass of the carbon atom, or it is 1.66 into 10 raised to minus 24 grams. The relation between AMU, gram and mole, 1 AMU is equals to 1 gram per mole. If you are given the sample mass in terms of AMU, you will substitute the atomic mass or molecular mass in terms of AMU. Numerator or denominator may be AMU mein rahega, and you can cancel and you can get the answer as a number. If you are having the mass in terms of grams, you need to substitute AMU in terms of gram per mole. Tab gram cancel hoke, you will get the answer in terms of moles. If you are taking some considerable amount of substance, like the amount of substance in grams, then you will get the answer in terms of moles. If you are taking the amount of substance in terms of AMU, AMU is very less amount, so you will get the answer not in terms of moles, एक छोटा सा number आएगा. Okay? ठीक है. So in molecules, we studied 2 different types of molecules, homonuclear as well as heteronuclear, yeah, homoatomic and heteroatomic. Homoatomic molecules are those molecules in which all the atoms are made up of same element. Heteroatomic are those molecules in which atoms are of different elements. They can be of different elements, right? Okay. उसके बाद हमने molecular mass find किया. In order to find the molecular mass, you need to add the masses of all the atoms present in the molecule. You need to remember masses of 1 to 20 elements. इनके अलावा you need to remember the mass of copper, which is 63, iron, which is 56, and iodine. Iodine is 127. Okay? Okay. याद हो जाएगा वो सब? Yes. Okay. In the last lecture, हमने in the last lecture we have discussed till question number 3. Question number 4, 5 और 6 करते हैं अभी. Question number 4 देखो. What are they asking in question number 4? They are asking us to find the mass of 1 into 10 power 22 molecules of CuSO4 dot 5H2O. कितने लोग ने ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया है? डन सर. डन. होमवर्क में दिया है, बहुत सारे लोग ने किए होंगे. हाँ. जो लोग ने नहीं किया है प्लीज अटेम्प्ट दिस एवरीवन. जो लोग ने किया है ऑलरेडी फिर से सॉल्व करो. ट्राई टू सॉल्व दिस इन लेसर अमाउंट ऑफ टाइम. जल्दी सॉल्व करने के लिए कोशिश करो. What is the mass of molecular mass of CuSO4.5H2O? Molecular mass or molecular weight? Molecular weight of CuSO4.5H2O. Copper is 63 plus sulfur is 32 plus 4 into 16, which is 64, plus 5 times H2O, मतलब 5 into 18. What is the mass? 250. 250. Is 250 the right answer? 249. 249. 49. 249. Yeah, 249. Yeah. 249. It is 249 AMU. They're asking the mass of how many molecules? 1 into 10 power 22. We know that 1 mole का मास इसका ही 1 मोल ले रहा हूं तो 1 मोल का मास कितना हो जाएगा? 249 ग्राम हो जाएगा. 1 Yes, mole yes. is nothing but 6.022 into 10 power 23. इतने का मास 249 grams है तो they're asking the mass of 1 into 10 power 22 molecules. ये कितना होगा? Unitary method, 10 power 22 divided by 6.022 into 10 power 23 into 249. यस, yes, सर. ओके. यहाँ पे आपको एक 10 बचेगा
कैलकुलेशन इजी करने के लिए देखो 249, suppose if I am taking this as 6, okay, 24 upon 6 is 4, right? So Yes. 249 upon Yes. 6 matlab it has to be 4 point something. Agreed? 40 point something. 40 point something divided by 10 मतलब 4 point आना चाहिए आंसर. आंसर 4 point में ऑप्शन सी है. Okay. No need to calculate the entire thing. In entrance examinations, you need to save time. Don't try to calculate the entire exact answer, because in the options it is given as 41 point, 415 point, 415 point तो नहीं रहेगा, because you are dividing 249 by some number. 249 से कम ही आएगा, 249 से ज़्यादा तो नहीं आएगा. 4.159. So 240 upon 6 is 40. So if you are dividing it by 10, it is 4 point something. Okay. Is that clear, everyone? So this is 4.159 grams. यहाँ पे आप लोग को थोड़ा डाउट आ सकता है, because we have given the answer none of this also, but none of this तो नहीं होगा. 4.1 उसी रेंज में आ रहे हैं ना. Okay. उतना भी डाउट है तो you can calculate the exact answer and mark, but जरूरत नहीं है. Always look for the options. Look for the options. पहले you need to try to get the answer easily. बाद में you need to do calculations, क्योंकि आपको वो आदत हो जाएगा. नहीं तो whenever you need to solve the calculation, तब आप करने का मन नहीं लगेगा. सब कुछ approximation लगता है. Okay, but make this as a habit. Try to solve this the entire thing during the lecture, but during exams, try to do some approximations and try to get the answer. Clear hai? Okay. Yes. Question number 5. The number of moles of so and so formed from a sample containing 0.0056 gram of Fe is. Yeah. How to solve this question? The number of moles of that particular compound that is formed from a sample containing 0.0056 gram of Fe. Anyone, any idea? Sir, we can do it by unitary method. What we can do Uh-huh. is that we can remove the entire molecular mass. Okay, we can get the molecular mass of the given molecule. Okay. उसके बाद अरमान? हाँ सर. हाँ. तो हम वो molecular mass को हम substitute कर जब 112 Fe मिलेगा तब इतना तैयार होगा, इतना बन जाएगा. तो अगर 0.0056 Fe दिया है तो कितना तैयार होगा? बिल्कुल सही. Very good. What is the molecular? What is the? यहाँ पे एक मिनट. What is the molecular formula given? NH4 SO4 NH4 twice SO4 Fe2 SO4 thrice dot 24 H2O. What is the molecular mass of this? Please tell me the molecular weight. 112. नहीं, molecular weight of this entire molecule. पूरा. The molecular weight of this molecule. NH4 twice SO4 Fe2 SO4 thrice dot 24 H2O.
कितना आएगा? नाइट्रोजन इज 14 NH4 का मास कितना होगा? नाइट्रोजन इज 14 plus 4 18 36. 18 into 2, yeah, plus sulfur is 32 plus 4 into oxygen is 16 plus 56 into 2 plus again 32 plus 4 into 16 64 98 हो गया ना SO4 का मास 64 plus 32 96 okay 96 into 3 plus 24 into H2O's mass is 18. Everyone, please understand how I am calculating the molecular mass. ये तो सबको पता ही है how to calculate the molecular mass. What is the value of this? 964. 962. बाकी लोग 964. 964. Please everyone cross check 964 है कि नहीं? 964 AMU. If it is 964, we will go ahead. Yes, sir. 964. 964. अब ऑब्जर्व Sir, करना 948 आ रहा है. 948 आ रहा है. Mathematics 964 आता है. Mathematics से please everyone arrive at a common answer please. हाँ सर 964 है. हाँ सर 964 Sir, sorry. 964. 964. 964. Okay. 964. अभी ये जो particular molecule है, in order to form this molecule, you require 2 Fe atoms. One molecule of this is having 2 Fe atoms. So in order to form one molecule of it, what is the mass of Fe that is required? Which is 112 AMU. Yes, sir. So with the help of 112 AMU, I am able to form 964 AMU of the molecule. Okay. Now with the help of 0056 gram, 0.0056 gram of Fe, how much amount of substance can be formed? Unitary method 0.0056, always substitute along with the units. Gram divided by 112 AMU into 964 AMU. AMU cancel तो हो ही जाएगा. Okay, you need to finally get the answer in terms of grams. क्योंकि you are taking considerable amount of Fe और grams में ले रहा हूँ तो I need to get the answer also in terms of grams. Any doubt anyone? No sir. Okay, so calculate करके बताना. Answer is okay, and we need to get that in terms of moles. अब तो हो ही गया. देखो, this is the mass, right? Yes, sir. This is the mass of the substance that can be formed. What are moles? 1 mole is equal to. Moles is equals to weight upon molecular weight. हाँ. Everyone, sample mass upon molecular mass na, number of entities is nothing but sample mass given weight divided by molecular weight. This is the weight. So moles क्या हो जाएगा? 0.0056 gram into 964 upon 112 into 964 AMU. AMU is nothing but gram per mole. gram cancel होगा. 964 cancel होगा. Mole ऊपर जाएगा. So I can write this as 56 upon 112 into 10 raised to
minus 4 mole. Yes. Any doubt? No sir. Any doubt anyone? नहीं समझे सर. हाँ कहाँ Can पे you नहीं? repeat? हाँ बताओ बताओ. Tell me the step कहाँ पे नहीं समझा आपको? सर वहाँ 112 को 964 से क्यों मल्टीप्लाई किया? Same. सबसे पहले एक एक स्टेप इंडिविजुअल स्टेप्स को देखते हैं. पहले ये वाला स्टेप समझ में आया? If I am taking this molecule, in each molecule I am having 2 Fe. So in order to form one molecule, the one molecule's mass is 964 AMU. So in order to form 964 AMU, I need to take 112 AMU of Fe. Clear है? Yes, sir. So 964 AMU बनने के लिए 112 AMU लग रहे हैं. So if I am having 0.0056 gram of Fe, how much amount of the molecule can be formed? How much amount of the substance can be formed? Unitary method से कर रहा हूँ. This upon this into this unitary method. यहाँ तक clear है? Yes. Yes sir. Okay. Yes. Yes, So sir. we got the mass of the substance that can be formed. This is not the moles. In the question, they are asking about the number of moles that can be formed. यहाँ पे आपको the number of moles पूछा है ना? What is number of particles formula? Sample mass upon molecular. अभी भी वही है. अभी number of particles के place में I'm calling that as number of moles. Number of particles is equals to sample mass upon molecular weight या molecular mass. What is the sample mass? This is the sample mass. What is the molecular mass? It is 964 AMU. वही put किया. This is the sample mass upon molecular mass is 964 AMU में put नहीं कर रहा हूँ, gram per mole में put कर रहा हूँ because we know this in terms of grams. Clear है? क्या Yes तक sir. clear Yes, है? sir. तो ग्राम Yes, ग्राम yes. cancel हुआ, mole ऊपर आया. I am writing that as 56 into 10 raised to minus 4 in order to do the calculation. 56 once, 56 2 times हो जाएगा. So answer is 0.5 into 10 raised to minus 4 mole. Okay. Clear है? Yes sir. सर हम पहले से ही मोल लेकर में सॉल्व कन्वर्ट कर करके सकते वो भी कर सकते हैं. मैं वही नेक्स्ट मेथड वही बताने वाला हूँ. इतना नहीं किया मैंने, जस्ट नंबर ऑफ मोल्स इन 0.056 ग्राम्स ऑफ Fe2 किया मैंने. तो ये भी सही है. मैं वही बताने वाला हूँ अभी. एक मिनट ना. एक बार देखना. You can also do this in another way. अभी मैं कैलकुलेट करते समय लेंथी प्रोसीजर किया क्योंकि मुझे लगा वो मास में पूछ रहे. बट दे आर आस्किंग इन टर्म्स ऑफ मोल्स. तो स्टार्टिंग में आप लोग Fe2 SO4 trace dot 24 H2O. Everyone, what is the mass of Fe given? Mass of Fe is 0.0056 gram. Can you tell me the moles of Fe? Given mass divided by total given mass upon molar mass. Given mass upon mass of Fe, right? 56. 56 divided by 56 gram per mole. Gram cancel होगा, which is equal to 56 into 10 raised to minus 4 mole upon 56. Any doubt anyone? No. 56 cancel होगा, 10 raised to minus 4 mole है. Okay. If I want to form 1 mole of this compound, tell me the moles of Fe required. You require 2 mole of Fe. 112. 2 mole. नहीं moles के बारे में पूछ रहा हूँ. 2 moles. 2 moles. 2 moles. इसके 1 मोल में you are having 2 moles of Fe. Yes, sir. Okay. So into molecule, I require 2 mole of Fe, but now I am having
only minus Sir, So- your voice is cracking. 10 raised to minus 4 Yes, upon sir. 2 into 1. Sir, your voice is breaking. अच्छा एक मिनट ना. Okay. Is it audible now? Is that okay? Yes, sir. Now okay. Yes, sir. अभी फाइन ना, ठीक है. Okay. मैं यहाँ पे क्या समझा रहा हूँ? If you observe the molecular formula, in 1 unit of this, you are having 2 atoms of Fe. So if I want to form 1 mole of this, I will be requiring 2 mole of Fe. Any doubt in that? No. Now I No, sir. have 10 raised to minus 4 mole of Fe with me. From this, how much amount of the molecules can be formed? Again, unitary method में ही करना है. It is 10 raised to minus 4 mole upon 2 mole into 1 mole. Yes, sir. Mole cancel होगा, which is nothing but 0.5 into 10 raised to minus 4 mole. This is a relatively simpler method. Okay, sir. This one. Relatively simpler method. इतना ज़्यादा molecular mass सब find करके लेके आने की जरूरत नहीं. Okay, so you can approach the question anyway. हमको जितना easily कर सकते हैं उतना easily करना चाहिए. So second method जो है ये better है. अगर आपको mass में भी पूछा है, एक बार moles आ गया, how to calculate mass? Multiply the moles with the molecular mass. Yes. है ना? Because formulas क्या है? Moles is equals to weight upon molecular weight. So if I want to find the weight, it is nothing but moles into molecular weight. Okay. Just substitute whenever you are substituting the units. थोड़ा ये वो देख लेना. यहाँ पे करना क्या चाहिए हमको? 0.5 into 10 raised to minus 4 mole into molecular weight मतलब उसका 964 ग्राम पर मोल हो जाएगा. Mole cancel होके you can get the answer in terms of grams. Okay, but in the question they are asking only moles. If you have any doubt in this question, ask me, or else I will go to the next question. Any doubt, anyone? No, sir. No, sir. Okay. For the benefit of other students, एक बार फिर से समझा रहा हूँ. They are asking how much amount of this particular substance can be made by using entire amount of 0.0056 grams of Fe. By analysis of the molecule, if I want to form 1 molecule, I am requiring 2 atoms of Fe. So if I want to form 1 mole of this, I will be requiring 2 moles of Fe. So पहले 0.0056 grams मतलब कितना मोल्स है वो निकाला मैंने, which is 10 raised to minus 4 mole. अगर 1 मोल के लिए 2 मोल लग रहे तो 10 raised to minus 4 मोल से कितने मोल्स बनेंगे? With the unitary method, this upon this into this unitary method, we got 0.5 into 10 raised to minus 4 mole. Clear? Okay. Yes, sir. Yeah. Next question. Yeah, this question. If 10 power 21 molecules are removed from 200 mg of CO2, the number of molecules of CO2 left are. कैसे करना है? Sir. सर पहले first number of molecules find करेंगे. First, we will find the number of molecules which are present in 200 milligrams of CO2. Once you do that, subtract 10 power 21 molecules from that, you can get the answer. एक बार करके देखें जल्दी. हाँ, sir. Sixth question. Tell me the number of molecules in 200 mg of CO2. 200 milligrams of CO2. कितने होंगे? Will be equal to given mass, which is 200 into 10 raised to minus 3 grams divided by what is the molecular mass of CO2? 44 million. 44 mu or 44
gram per mole. Okay, so gram cancel होगा. I think 44 5 times is 200. 5 times है क्या? नहीं, 180 हो रहा है. Yeah, my maths is very weak. हाँ, tell me. This is 22. This is 100. 50 upon 11 na. 50 upon 11 into 10 raised to minus 3 mole, which is equal to 50 upon 11 into 10 raised to minus 3 into 6.022 into 10 power 23, if I'm not wrong. सही है ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Which will be equal to 6 5 30. Can you tell me the answer for this? 50 into 6.022. कितना होगा? Sir, approximately 2.7 आता है. Approximately 2.7 into 10 raised to 21. या ये 10 raised to minus 3 और 10 raised to 23 आपको 10 raised to 20 हो जाएगा. 50 upon 11 into 6.022. You need to do calculations. I hope सब लोग को multiplication division करना तो आता है. 27.37 आता है multiplication and division. 27.37. Okay. Okay, 15 to 6 आपको around 300 पे आएगा. 300 point something. 300 upon 11. Yeah, it will be सही है 27. And 27 point कितना है? 27.37. 27.37 into 10 power 20, or you can write this as multiply this by 10, divide this by 10. I'm shifting 2.737 into 10 power 21. ऐसा क्यों लिखा? Because they are subtracting 10 power 21 molecules ना, they are removing 10 power 21 molecules. So इसको भी 10 power 21 के terms में लिखने से better होगा करके वैसा लिखा. Okay? Yes, sir. So minus after removing 10 power 21 CO2 कितना रहेगा? 2.737 into 10 power 21 minus 10 power 21, which is equal to 1. 10 power 21 कॉमन लिया तो 2.737 minus 1 होगा 1.737 into 10 power 21 होगा. Any doubt? यहाँ पे 10 power 21 कॉमन लिया मैंने. 10 power 21 into 2.737 minus 1 होगा, which is 1.737 into 10 power 21. So answers में आपको they are again asking in terms of moles. Okay, so convert this into moles. They are asking the number of molecules or the number of moles of CO2 left. How to convert this into number of moles? Divide by 6.022. Divide by 6.022 into 10 power 23. Okay, देखो again unitary method ही है. 1 mole मतलब 6.022 into 10 power 23 है. कितने moles होंगे if you have 1.737 into 10 power 21 molecules? Unitary method 1.737 into 10 power 21 divided by 6.022 into 10 power 23 into 1 mole. Calculate this, please. Sir. You can calculate this as 17.37. Again, multiply this by 10, divide it by 10. 10 upon 10. So 1.737 into 10 will be 17.37. 17.37
divided by 6.022 into 10 raised to minus 3. Any doubt? No, sir. 18 upon 6 कितना होता है? 3 होता है ना? 18 upon 6 is 3. So 17.37 upon 6, 2 point something 9 के terms में आना चाहिए. 2.87 something आता है. हाँ, so it is 2.88 into 10 raised to minus 3. Okay. Again ending वाले last में थोड़ा approximation करके हमने आंसर मार्क कर दिया, because we are getting that as something like 17.37 upon 6.022 और 2 point में ही आएगा. Any doubt? Clear है ना calculation? Yes, sir. So sir, these clear. questions are testing only your solving skills. थोड़ा mathematics से ज़्यादा concept तो इतना ही है. Find the number of molecules present in 200 milligrams. From that you need to remove the 10 power 21 molecules. Okay, clear? Okay. Yes, sir. Okay, ये 6 questions तो हो गया. If you have any doubt in among these 6, ask me now, or else I will move to the next set of questions. Okay, most Sir? of the people, हाँ बताओ. आपने जो number of moles का formula बताया, that is basically number of molecules only, right? Number of particles here. Okay, I can either ask you the question number of apples, or I can ask the number of dozens of apples. That is Formula तो basically वही. number of particles in terms of Avogadro. हाँ, number of particles in terms of Avogadro number, in terms of moles. Okay, either I can call that as, because final answer आपको grams में दिया तो you are getting answer in terms of moles ना, Yes. इसलिए number of moles करके बोल रहा हूँ. That is basically number of particles only. Number of particles is sample mass upon molecular mass, but whenever the sample mass is given in grams, we get the answer in terms of moles. Exact number के लिए into 6.022 into 10 power 23 से multiply करने से आता है. So rather than saying number of particles, I am directly referring to that as number of moles. Any doubt, anyone? Sir, please explain the 6th one again. 6th one, ये वाला ना? हाँ, कर. हाँ. 6th वाले में they are asking about number of molecules in 200 milligrams of CO2 that are going to be left if I am removing 10 power 21 molecules of CO2. So पहले 200 milligrams में कितने molecules है वो find किया. वो कैसे find किया? Sample mass upon molecular mass is the number of molecules. Sample mass is 200 into 10 raised to minus 3. Milli indicates 10 raised to minus 3 ना. Okay. So उससे हमको मिला है इतने सारे. Okay. 50 upon 11 into 10 power minus 3 mole. यहाँ पे ही मैं 10 power 21 को moles में convert करके subtract कर सकते थे, but सबसे पहले इसको molecules में convert किया, because again मैंने question देखा नहीं, question में moles पूछा है या molecules पूछा है. आप लोग यहाँ पे calculation में थोड़ा short कर सकते थे. If you convert this 10 power 21 into moles, तब इससे directly subtract कर सकते थे ना. Or you can convert this into molecules by multiplying 1 mole is 6.022 into 10 power 23. You got these many number of molecules. From this you are removing 10 power 21. So this minus 10 power 21. Any doubt यहाँ तक? सपा? No, sir. Okay. उसके बाद 10 power 21 common लिया, because we are having 10 power 21, 10 power 21. This can be written as, ये जो part है, जिनको confusion है, देखा, I can write this as minus 1 into 10 power 21 ना. So 10 power 21 common लिया तो 2.737 minus 1, which is 1.737 into 10 power 21. These are the number of molecules. Molecules of CO2, but they're asking the answer in terms of moles. Okay, suppose if we have 48 apples, if I'm asking in terms of dozens, you'll be saying that as 4 dozen na, by dividing it by 12. अभी इतने सारे molecules है,
you need to express this in terms of moles. So divide it by 6.022 into 10 power 23. और भी डिटेल में आपको यहाँ पे दिखाया. 1 मोल मतलब 6.022 into 10 power 23 है. 1.737 into 10 power 21 मतलब कितना मोल्स होगा. This upon this into this. Okay. हाँ. Okay. Other students, please put your video on. Please make this as a habit. Please put your video on. You will also feel involved. Okay. And मुझे भी ज़्यादा पता चलेगा आप लोग को समझ में आ रही है या डाउट है. हाँ. ठीक है. Good. Next question. Mass of one molecule of H2SO4 in AMU and in grams. बहुत simple question है. AMU में तो आपको आ ही गया होगा. 98 AMU. 98 AMU. Okay. What is the relation between AMU and grams? 1 AMU is equal to 1.66 into 10 raised to 24 grams. 10 raised to minus 20. 1.66 into 10 raised to minus 24 grams. Okay. बता दो आंसर फिर. 1.6268 into 10 raised to minus 22 grams. Okay. Okay. 1 point फिर से बताना. मैंने सर पॉइंट शिफ्ट किया इधर. शिफ्ट किया है. 268 into 10 raised to minus 22. 1.62. ऐसा पहले आपको ऐसा कुछ आया ना. 1.62 है क्या? हाँ. 162.68. Okay. 162.68 into 10 raised to minus 24 grams आया है स्टार्टिंग में आपको. In general, अगर इसको if you are expressing this as some number point, we will tend to write all the answers also as 1 point या 2 point या 3 point. So इसलिए उन्होंने shift किया है. Very good. Which is 1.6268 into 10 raised to minus 22 grams. शिफ्ट करने के लिए आपको यहाँ पे 2 डेसिमल शिफ्ट करना है ना. So multiply it by 100 divided by 100. 162 upon 100 is 1.62. 10 raised to minus 24 into 100 is 10 raised to minus 22. Okay. I hope आपको पॉइंट शिफ्टिंग में जिनको भी कंफ्यूजन है प्लीज देखना. Okay. Very, very, very important general information. You will be asked this question in your NEET or in your mains directly. They will ask which of the following is an anti-cancer drug. Okay. Or which of the following is used for treating tumors. So आपको ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है प्लैटिनम NH3 twice Cl2 इसके बारे में हम बाद में और एक चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. अभी याद रख लेना इंफॉर्मेशन. This is called as cisplatin. Cisplatin, platinum NH3 twice Cl2. Okay. याद Sir, रखना. even Taxol is used for cancer treatment, na? Sorry, what's that? Taxol. It is given in NCERT. Cisplatin and Taxol. Cisplatin and Taxol. ये Taxol कहाँ पे देखा है आपने? पहले चैप्टर में दिया है? हाँ सर, पहले चैप्टर में NCERT में दिया है. ठीक है. Okay. Good. Everyone please go through NCERT textbook also. जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है Taxol वो भी याद रख लेना. बट Taxol के बारे में हम पढ़ेंगे नहीं बाद में. But you can remember that this particular molecule and its analysis. Platinum NH3 twice Cl2. इसका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. Everything we will study in detail about this molecule. So most of the question, in fact, बहुत बार आया है ये वाला question. NEET में as well as in JEE mains. They will directly ask which of the following is an anti-cancer drug, or they may ask about its structure. Cis का मतलब क्या होता है, and all there are a lot of other things we will understand in the next chapters. Okay. अभी याद रख लेना. PT NH3 twice Cl2 and और एक information भी दिया है Taxol. Can you tell me the spelling of that, Arman?
TaXOL. Okay. ये भी याद रख लेना आप लोग. प्लैटिनम का एटॉमिक मास दिया है आपको 195 mu. You need to find the mass of one molecule in AMU and in grams. सेम वही करना है. 300 U. Very good. 300 U. Molecular mass is equal to 300 U, or it is 300 into 1.66 into 10 raised to minus 24 grams, which is equal to 498. 498. 4.98. नहीं, हाँ 4.98. 4.98 into 10 raised to minus 22 grams. Okay. Yes. Okay. Remember, everyone, remember this information. Next question. Aspirin formula is C9H8O4. How many oxygen atoms are there in a tablet weighing 360 milligrams? So we'll find number of molecules. 1.5. First we will find number of moles and then multiply it by 6.022 into 10 raised to 23. Okay, tell me the answer. Final answer, please. Tell me the answer in terms of moles. So just a सर मैंने जस्ट उसको 360 mg को ग्राम में कन्वर्ट करके Okay. 4 ग्राम्स पर मोल किया है डिवाइड, तो 1.5 into 10 raised to -2 आया है. नहीं सफा एक बार फिर से बताना. आपने 360 मिलीग्राम्स को you have divided by 4. Sir, I have converted it into 0.36 gram. Yeah, 0.36 gram divided by 64 U, मतलब उसको 64 grams per mole किया फिर. हाँ, एक मिनट यहाँ पे रुकना. Why are you dividing it by 64 mu or 64 gram per mole? Because number of मतलब moles पूछा था ना इधर, tablet का weight. How many atoms are there in? हाँ, but वो जो weight है 360 milligram से, this is not the mass of oxygen ना. Tablet है. हाँ, this is the mass of the tablet. So करो. सर मेरा 0.008 मोल आ रहा है. I think that's the right answer. Arman, please put your video on. बहुत आंसर कर रहे तुम, but अपना वीडियो ऑन नहीं रख रहे. सर वो लैपटॉप को कैमरा नहीं है मेरे. लैपटॉप को कैमरा नहीं है. देखो Sir. शुभांकर देखो. No, he is bringing his charger. सब कुछ he is live. वो सर शुभांकर हमेशा ऑन ही रख रहा है. गुड. खत्म हो रहा था वो. हाँ समझा. अरमान try to get a webcam. हो सकता है तो एक webcam ऑर्डर कर लेना Amazon पे. हाँ सर. सर आप मुझे जानते हो ना, मैं आया था ना आपके यहाँ. My parents came to meet you in Buns and Coffee, Telugu. अच्छा Mother spoke Telugu with you. हाँ. याद आ रहे. So 2 into 10 raised to हाँ, minus. okay, yeah. Got it, Okay. Arman. Yes sir. कैसे हो अभी? So, sir. अभी कर रहे हैं ठीक ठाक? You are answering good. Yeah, thank you sir. हाँ. Yeah, someone is saying something. सर मेरा 0.008 मोल्स आ रहा है. 0.008 moles. I think that's the right answer. Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर मेरा भी वही है. Good. Everyone, once again, I'm requesting you, जो लोग अपना वीडियो ऑन रख सकते हैं, please put your video on.
उससे आपको भी पढ़ने का मन लगेगा, मुझे और पढ़ाने का मन करेगा। मैं तो पढ़ाऊंगा ही है, बट इट विल मोटिवेट मी मोर एंड मोर ना। Yeah. सबसे पहले क्वेश्चन में वो जो 360 मिलीग्राम जो भी दिया है, दिस इज mass of the tablet or mass of aspirin. This is not mass of oxygen. If it is mass of oxygen, आप लोग sample mass divided by atomic mass of oxygen, you can get the number of atoms of oxygen. So सबसे पहले आपको करना क्या है? You need to find number of molecules of aspirin. Number of molecules of C9H8O4, which is equal to उसका sample mass, which is 360 into 10 raised to minus 3 grams divided by what is the molecular mass of it? 180 180. Yes, is 180. इसका molecular weight जो है it is 180 U. So आपको 180 AMU के अलावा substitute that in gram per mole. gram cancel होगा 2 times. So it is 2 into 10 raised to minus 3 mole. Okay. Now do the analysis. C9H8O4. If you are having one molecule of this, you are having 4 oxygen atoms. Right? If you are having 2 into 10 raised to minus 3 mole of this, you will be having 4 into 2 into 10 raised to minus 3 mole of oxygen atoms, which is equal to 8 into 10 raised to minus 3 mole of O. Clear? Okay, good. सत्यजीत बहुत खुश हो रहे हैं तुम। ठीक है, हाँ सर। ओके, अच्छा ये नेक्स्ट, hemoglobin contains 0.25% Fe by mass. The molecular weight, ये जो है this is molecular weight. The molecular weight of hemoglobin is 89,600. In general आपको AMU ये सब mention नहीं करते हैं, we need to take that as AMU only. Okay, 89,600 AMU. Calculate number of Fe atoms per molecule of Fe. Sorry, per molecule of hemoglobin, HP. Yeah, answer. ओके, जो लोग ने सॉल्व नहीं किया फिर अभी अटेम्प्ट करो। घर पे किसी ने भी सॉल्व नहीं किया क्या? सर वो कल पहले तो लेक्चर देखने में टाइम Four more. कल फर्स्ट डे था। ओके ओके ठीक है। कितना है कार्तिक? Four moles, sir. 4 moles, 4 atoms. 4 atoms, yeah, 4 atoms. एक मॉलिक्यूल में पूछ रहे कार्तिक का। सी द क्वेश्चन, Fe sir. atoms per molecule. एक मॉलिक्यूल में 4 atoms है, 4 atoms of Fe रहना चाहिए। Yes, sir. 4 atoms. Sir, you are not audible. सर यू आर म्यूट।
आपकी आवाज नहीं आ रही। It got disconnected. एक मिनट हाँ. And the reason why I ask you to put your video on, ताकि आप लोग मुझे बता पाए. Like I got disconnected, then we can get back to the lecture. सर 4 attempts. हाँ, 4 atoms सही है. 4 atoms बिल्कुल सही हाँ है. सर 4 If I want to find number of Fe atoms, I need to the mass of Fe, right? Mass of Fe divided by atomic mass of Fe is nothing but the number of Fe atoms. Mass of Fe कितना है? They're saying it as 0.25%. Okay, 0.25%. Percentage I hope सब लोग को calculate करना आता है. अगर नहीं आता है एक बार देख लेना. If you are having the entire 100% as Fe, तब क्या होना चाहिए? Mass of Fe has to be 89,600. But पूरा का पूरा Fe से बना है क्या? नहीं ना? कितना percentage है? Only the 0.25% is of Fe. So what will be the mass? 0.25 upon 100, again unitary method, into 89,600. So it is 896 upon 4, which is equal to कितना आता है ये? 214. 214 या 224? 224 आता है. It is 224. 224 है. 224 AMU. So what will be the number of Fe atoms? 224 AMU Sir, divided by 56 AMU, which is equal to 4. Yeah, Amit, class tell me. sir मैंने अलग methods. बताओ, देखता हूँ सही है कि नहीं. मैंने total mass लिया और उसको mass of Fe से divide किया. टोटल मास को मास ऑफ Fe से कैसे डिवाइड कर सकते हैं? द एंटायर मास इज नॉट ऑफ Fe ना. हाउ कैन यू डू दैट? 89,600 को Fe से कैसे डिवाइड करो? उसका 25% is the mass of Fe ना. उसका 25%. सो सबसे पहले मास ऑफ Fe निकाल के उसके बाद एटम निकालना होगा ना. मतलब sir, इसमें से 89,600 में से the entire mass is not of Fe. So why will you divide this by mass of Fe if the entire mass is not of Fe? okay हाँ. वो है ना. आंसर आपको गलती से सही आया होगा, but that's not the way to do it, right? समझा? हाँ sir. बाकी लोग, everyone. Shall I go to the next question? बोर हो रहे क्या आप लोग क्वेश्चन से? ज्यादा क्वेश्चंस जैसे लग रहे. बोर तो नहीं हो रहे ना? No sir. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. जैसे अभी हीमोग्लोबिन है, ये इंफॉर्मेशन नीट वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है. एवरीवन, नीट स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स गोइंग टू अटेम्प्ट नीट, they will directly ask the question, number of molecules of Fe or number of atoms of Fe present per molecule of hemoglobin. The answer is 4. You need to remember the result. Okay, the answer is 4. Next, insulin. Insulin contains 3.2% sulfur by mass. Calculate the minimum molecular weight of insulin. Everyone solve this question. हमारे फाउंडेशन बच्चों के अलावा बाकी किसी को आया तो आंसर बताना मुझे. Our foundation students, please don't answer. In order to motivate you during the online lectures, हमने एक सोचा है, those who
participate more and more during the online lecture. Participation is on the basis of you need to put your video on, as well as you need to interact with us. Okay, those who do that, maybe after 1 month or 2 months, मतलब online lectures जब तक रहेगा, Kindle, we will give you a Kindle. Okay. Forever. हाँ, आपको ये रहेगा वो Kindle forever. Kindle वो जो पढ़ते हैं ना Amazon Kindle, बुक्स पढ़ने के लिए. ज्यादा प्रेशर मत फील करना, कंपल्सरी आंसर करना ये करके, डोंट वरी, यू बी योरसेल्फ. आप लोग वीडियो ऑन रख के इंटरेक्ट करते जाना. It will be based on lot of things. Okay. If the center reopens in 2 months, 2 months के बाद देंगे. अगर बहुत शिफ्ट हो रहे तो we will take your address. We will get that delivered to you. Okay. Sir, Yeah. Answer 1000 AU आता है. 1000 AMU. That's the right answer. Can you explain me your procedure? Yes sir. इंसुलिन मतलब मिनिमम जो सल्फर होगा वो, मतलब हमने अगर एक एटम सल्फर है मिनिमम लिया तो एक एटम का सल्फर का मास होता है 32U. तो वो मतलब कितने इंसुलिन में होगा, ऐसे यूनिटरी मेथड से सॉल्व किया और उसका 1000U आया. बिल्कुल सही है. Very good. They are asking what is the minimum molecular weight of insulin. Minimum molecular weight के लिए उसके अंदर सल्फर भी कितना होना चाहिए, मिनिमम अमाउंट में होना चाहिए. If you are continuously increasing the amount of sulfur inside it, what will happen? The molecular weight of insulin will keep on increasing, right? Least weight आने के लिए the amount of sulfur must be least. Amount of sulfur least कब हो सकता है? If you are having only 1 atom of sulfur, right? Can I say that? So starting में you can start by let the molecular weight of insulin be X. Okay. What will be the mass of sulfur in it? 3.2 by 100x. 2%. 3.2 upon 100x, 3.2% ना percentage में. If the 100% is of sulfur, its mass has to be x. आपको केवल 3.2% ही है, so mass कितना रहेगा? It is 3.2 upon 100 into x. So the mass of sulfur is 3.2x upon 100. Okay. ये जो particular mass है, this is mass of sulfur. यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं. For minimum molecular weight, number of sulfur atoms must be 1. एक एटम सल्फर का मास कितना है? 32 AMU. 32 AMU. So equate this to 32 AMU. So आपको x is equals to 1000 AMU आएगा. 32 3.2 upon वो 1000 हो गया. 32 कैंसिल कर दिया. Okay. Any doubt anyone? Okay. Let us take 2 minutes break. 2 minutes break. We will continue. तब तक आप लोग चाहिए तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो. I am taking 2 minutes break.
चलो कंटिन्यू करते हैं. The number of neutrons. Sir, Yeah, tell me. is the answer 24? 24 क्या है? There will be some units. 24 मोल. मोल है क्या? 24 मोल. हाँ Okay. ये 24 मोल है. देखते हैं. Can be possible. The number of neutrons present in 54 ml of water. सबसे पहले, if you want to calculate the number of entities, it is sample mass upon molecular mass. You need to know mass. But यहाँ पे आपको volume में दिया है. But we know the density of water as 1 gram per ml. सबको पता है ये? Yes, sir. Okay. If the density of water is 1 gram per ml, so what is the mass of water? 18 18 gram. 18 gram. 54 gram है ना? 54 ml दिया है. हाँ sorry 54 sorry ml. 54 gram. Yeah, it is 54 ml into 1 gram per ml. ml cancel हुआ. We got that as 54 gram. Okay. ठीक है. So what were the number of H2O molecules? Number of H2O molecules will be given mass upon molecular mass 18 gram per mole. gram cancel हुआ. 3 होता है ना mole. ये? 3 mole of H2O. Now do the analysis of H2O. In H2O, you are having 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. Yes. हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? It is 1H1. Atomic number 1, mass number 1. ऑक्सीजन का सिंबल atomic number 8, mass number 16. 16. How to calculate the number of neutrons? A minus Z. Very good. Number of neutrons is A minus Z. The mass number minus the atomic number. इसमें number of hydrogen में neutrons कितना होता? Okay. हाइड्रोजन में 0 होगा ना सर? हाँ वही 1 minus 1 यहाँ पे 0. In hydrogen you don't have any neutron. In case of oxygen the number of 8. neutrons are 16 minus 8, which is equals to 8. Okay. It is mass number minus the atomic number 16 minus 8, which is equal to 8. So यहाँ पे आपको neutrons के लिए total number of neutrons यहाँ पे 2 into 0 plus 1 into 8. So total neutrons in one molecule of H2O. In one H2O, you have 8 neutrons. So if you are having 3 mole of H2O, neutrons कितने रहेंगे? It is 24. 3 mole into 8, which is equal to 24 mole. 24 mole. 24 mole. Okay, clear है? Okay. Can you explain the previous question? पूछो निरल बताओ. Previous question explain कीजिए. ये वाला सल्फर का हाँ. क्वेश्चन इसमें they're asking about the minimum molecular weight of insulin. अभी ऐसा देख सोचो, कुछ तो फॉर्मूला है sum A x times B y times and sulfur जो है इसमें Z times. Okay, they are giving us information only about the sulfur. If I want to have this particular molecule a minimum molecular weight, what should be the value of Z? If you can control Z, what should be the molecular weight of Z? Sorry, what will be the number of Z? Must be equal to 1. Agreed? Z1 हो गया तो ये जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का मास जो है कम हो जाएगा, लीस्ट हो जाएगा. बिकॉज मेरे हाथ में वो सल्फर को ही कंट्रोल करने के लिए कुछ डेटा दिया है. क्लियर है? ओके, सो आई एम टेकिंग द मास ऑफ इंसुलिन एज x. उसका 3.2% मतलब आपको 3.2 अपॉन 100 इंटू एक्स हुआ. दिस इज द मास ऑफ सल्फर. सल्फर कितने एटम्स है? एक ही एटम में
एक एटम का मास कितना होता है सल्फर का 32 mu, सो इसको मैं 32 mu से इक्वेट किया. So from that I got the value of x. X as 1000 U. Any doubt? Clear है? Yes, sir. Okay. Yeah, others also. Clear है सब कुछ? So one doubt. Yes, sir. Sir. Yeah. Tell me. Sir, this question, can you explain the first half again? I got disconnected. ये वाला 54 ml वाला. हाँ sir. देखो वाटर का डेंसिटी ये आपको पता होना ही चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन में देते नहीं है. वाटर डेंसिटी इज 1 gram per ml, मतलब इट्स each ml weighs 1 gram. Okay, so if I am taking 54 ml of it, the mass of it will become 1 ml 1 gram है तो 54 ml will be 54 grams. Yes. So I am calculating the number of molecules of water first. ऐसा क्यों कर रहा हूँ? सबसे पहले मुझे इस एनालिसिस से कर जाना चाहिए. एक H2O मॉलिक्यूल में फर्स्ट आई एम कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. You have 2 hydrogens and 1 oxygen. In hydrogen you don't have any neutron. Hydrogen's atomic number is 1 and the mass number is 1. Mass number minus atomic number is number of neutrons. Hydrogen के अंदर न्यूट्रॉन नहीं रहता है, so the number of neutrons are 0, so 2 into 0. Oxygen के अंदर you have 8 neutrons. So in every molecule of H2O you have 8 neutrons. So first I am trying to calculate the number of molecules of H2O. Once I know the number of molecules, I can calculate the number of neutrons. Number of molecules of H2O are sample mass upon molecular mass, which are 3 moles. एक में 8 है तो 3 मोल में कितना रहेगा? 3 mole into 8, which is 24 mole. Any doubt? So why did you use the density formula and not directly? Because you are given sample volume. What is our formula? The basic formula is sample mass upon molecular mass. Mass upon mass होता है ना? Okay. But here it is given 54 ml. This is not the mass. इसलिए पहले उसको mass में convert करके कर रहा हूँ. Okay, yes. Clear है? Excuse me, sir. Yeah, Shardali, बताओ. Sir, we will be provided with the density of water, or we will remember it. Density of water जो है ये this is one of the basic information you need to remember this. If you are given any other substance, you will definitely be given the density. Water के लिए कभी देते नहीं है. 1 gram per ml pure water का density 1 gram per ml. This is standard. Okay, sir. ये पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए. इनफैक्ट स्टूडेंट्स को ही नहीं, इन जनरल सब लोग को. Yes, sir. घर पे भी आज बता देना सबको. Density of water 1 gram per ml. Okay? Yes, sir. ठीक है. Next. Which of the following pairs of gases contains same number of molecules? Option A. Option A. Number of molecules चाहिए आप लोग को. Yeah. Option A. Option A, yes. Option A. Yes, sir. 15 gram of O2 मतलब half mole है. 14 gram of N2 भी half Half mole है. mole. 8 gram of O2 मतलब कितने moles हो जाएगा? 1/4. 1/4 mole. Very good. 22 gram of CO2 मतलब Half. half mole. Half mole. Very good. 28 gram of N2. One. Number of moles? 1 mole. mole. 1 mole. Very good. 22 gram of CO2. Half Half. mole हो गया. Half mole. 32 gram of O2. 1. 1. 32 gram of N2. 1 and 1/4. 1/4. 1 Okay. 1/4. Okay, good. सही है. अरमान तो बहुत फास्ट है. ठीक है. 32 upon 28 ना? Okay. So answer is A. Everyone. सही है ना? If you have any doubt, ask me. Okay. They're asking about number of molecules. They're not asking about the number of atoms. यहाँ पे atoms भी पूछा तो वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में into 2 ही मल्टीप्लाई करेंगे. Okay. Question number 2. The number of hydrogen atoms present in 25.6 gram of sucrose, which has molar mass of 342.3 grams.
हाइड्रोजन एटम्स चाहिए. What is the formula for sucrose? B. C11H22O11. नहीं C12 है. सब लोग पता नहीं ये क्यों बोलते हैं हाँ, C11. C12H ऐसे याद रखते हैं क्या आप H22O11. लोग? मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, ऐसे याद रखते हो क्या? ग्लूकोज में C6H12O6 ऑक्सीजन कार्बन सेम रहता है. सुक्रोज में भी वैसा ही होगा, ऑक्सीजन कार्बन सेम रहेगा. नहीं रहता C12H22O11. सुक्रोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. तो बाद में हम पढ़ेंगे. सुक्रोज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आता है इन केमिस्ट्री. About its structure, about the glucose and fructose, and there are a lot of other things, very interesting things. So organic में पढ़ेंगे हम. देखते हैं. This chapter जिसमें सुक्रोज के बारे में पढ़ेंगे, that is our second last chapter in organic. First you will get the number of molecules of sucrose. So 9.91 into 10 raised to 23. 9.91 into 10 raised to 23 आया है. चेक करता हूँ. Divided by 342.3. What are these? These are the number of molecules of sucrose, right? Sample mass upon molecular mass. Any doubt? कितने moles है? Okay. कितने mole? If I want to find number of hydrogen, I need to multiply this with 22. Any doubt? No, sir. हाँ, निरल पूछो. वो मोल्स में कैसे है? मतलब मोलर मास ग्राम्स में दिया है ना, तो ग्राम ग्राम कैंसिल होगा. मोल्स कहाँ से आया? निरल एक बार ध्यान से सुनना. Whenever you are substituting, substitute along with units. This is sample mass upon molar mass. ग्राम्स पे दिया है, गलत दिया है. मोलर मास का मतलब mass of 1 mole of substance. Okay, which is equals to 342.3 grams. एक मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा? It is 342.3 gram per mole. Okay, whenever we substitute, we will always substitute the molecular mass only. Okay, आपको यहाँ पे 25.6 ग्राम divided by 342.3 ग्राम पर मोल में ही सब्स्टिट्यूट करना है. Okay, that will give you the amount in terms of moles only. 25.6 grams मतलब एक sufficient quantity है. ग्राम्स में जब भी आप लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर रहे हैं, you will always get that in terms of moles. क्लियर है? बाद में आप लोग इन लेटर स्टेजेस इतना डिटेल्स में लिखने की जरूरत नहीं. स्टार्टिंग है ना, इसलिए डिटेल में सब कुछ लिख रहे हैं. बाद में डायरेक्टली 25.6 डिवाइड बाय 342 करके मोल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, ठीक है. So you got the moles of sucrose as 25.6 divided by 342.3 moles है ये sucrose का. Each sucrose molecule has 22 hydrogen atoms. So I need to multiply it by number of hydrogen atoms to get the number of atoms of hydrogen in these many moles. Final answer will be 342.3 into 22 into 6.022 into 10 power 23. Any doubt anyone? No, sir. No, sir. अभी देखना यहाँ पे 25 into 22 into 6 divided by 342. किसी ने 9.91 कहा ना? I think it is possible. 9.27 कुछ आ रहा है सर. 9.27 आ रहा है क्या? हाँ. Yes. एग्जैक्ट कैलकुलेशन है वो. सर 9.9
minute, 25.6 into 22 into 6.022 divided by 342, 9.91 आता है. Please do the calculation properly. You will get that as 9.91 exact. Almost equal to 9.91 into 10 power 23. ये तो multiplication हुआ. I hope you can do that. 22 into 6 into 25.6 divided by 342. Once again, I'm repeating, no need to get the right answers. I just want your participation. Please put your video on. I just want your participation, right? जो लोग ज़्यादा right answers बोलेंगे, उनको Kindle नहीं देने वाला हूँ. ऐसा कुछ नहीं है. Those who effectively participate in discussion, those who put their doubts, उनको, okay? Don't think जो सही answer देते हैं उनको ही दे मिलेगा. I just want participation. Is this clear? Yes. Okay, question. Answer is B. Third वाला क्वेश्चन देखो. एक 75 kg का पर्सन है जिसमें हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन जो है it is 10%. So what is the mass because of hydrogen? 7.5. 7.5 kg. Okay, what they're saying is all the atoms of hydrogen are replaced by 1H2. Actual hydrogen atom क्या है? 1H1 है. Okay, 1H2 is the isotope of hydrogen which is called as deuterium. 1H1 का मास नंबर कितना है? 1 AMU. 1H2 का मास नंबर क्या है? 2 है. मतलब उसका मास कितना हो जाएगा? 2 AMU होगा. Agreed? Yes, sir. Okay. Its mass is 2 AMU. So I am replacing all 1H1 with 1H2. They're asking what would be the gain in the mass of the person? Answer? Answer please. $75 kg है वो. 7.5 kg. वो 75 kg है. इसमें से 7.5 kg is because of 1H1. Okay. If I am replacing it by 1H2, इसका मास कितना हो जाएगा? डबल हो गया ना? 15 kg होगा. 7 kg 75 से I am removing 7.5 kg and I am adding now 15 kg because I am replacing it by 1H2 ना. So net में कितना ऐड किया? 7.5 ही ऐड किया ना? हाँ, So what is the 7.5. So what is the increase in mass? It is 75 plus 7.5 kg. I hope आप लोग ने क्वेश्चन पढ़ा है. टाइम खत्म हो रहा है करके मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन करने लगा. एक बार once read the question. The most abundant elements by mass in the body of healthy human adult are oxygen 61.4%, carbon 22.9%, hydrogen 10%, and nitrogen 2.6%. The weight which a 75 kg person would gain if all H atoms are replaced by 2 H atoms, H2. This indicates it is replaced by its isotope. Okay. 1H1 हटा दिया तो 7.5 kg का नुकसान हो रहा है या घट रहा है. I am adding 1H2. 1H2 मतलब उसका twice the mass हो गया. 7.5 kg ऐड नहीं कर रहा हूँ, 15 kg ऐड कर रहा हूँ. So answer has to be 75 plus 7.5. So there is increase in mass of 7.5 kg. Don't mark that as 15 kg क्योंकि 7.5 kg 1H1 से घटा भी है ना, वो भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा. Okay, the increase in mass is only 7.5 kg. Is that clear? Okay, ठीक है.
क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते, लास्ट क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन आप लोग बाद में कर लेना। 4th क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। How many moles of magnesium phosphate will contain 0.25 mole of oxygen atoms? Answer please. Option B. Option B. 125 B. Option B, very good, very good. Mg3PO4 twice. एक बार ये देख लेना, if I'm taking 1 mole Mg3PO4 twice, how many moles of oxygen are present? 8 moles. 8 mole. Mole. 4 into 2 8 mole है, 8 mole हो. So if I'm taking only नहीं, अभी दिया है 0.25 मोल ऑफ O है, 0.25 मोल ऑक्सीजन एटम्स है. सो Mg3PO4 twice कितना होगा? यूनिटरी मेथड 0.25 upon 8 into 1 mole. 1 mole. So it is 1 by 32 mole. 1 upon 32 is 0.03125 है. तो उसको ठीक है वैसे ही लिखते हैं. This is equal to 0.03125 mole. I can write this as 3.125 into 10 raised to minus 2. Any doubt anyone? समझो क्वेश्चन को समझो. क्वेश्चन में ये पूछा है, No doubt. how many moles of magnesium phosphate must be taken so as to get 0.25 mole of oxygen atoms? एक मोल लिया तो इसमें आपको PO4 twice मतलब एक PO4 में 4 ऑक्सीजन एटम्स है, PO4 twice मतलब 8 हो गया. So if I'm taking 1 mole of this, I will be having 8 mole of O. In order to get 0.25 mole of O, how much amount of Mg3PO4 twice must be taken? Unitary method, this upon this into this. Okay. Yes sir. Okay, good. We will continue. 5th question एक बच गया, वो भी कर ले क्या? करते हैं ना सर. Ask. आप लोग का आंसर आ गया तो बता देना. The sample of contains 1.06. सेम वही करना है. हाइड्रोजन एटम्स इसमें 12 है. एक मोल में कितना है? 12 है. 3.18 मोल्स आने के लिए क्या करना चाहिए? 3.18 divided by 12 is the answer. Yes, sir. 1 मोल में आपको 12H है, 12 मोल ऑफ H. 3.18 के लिए कितना लगेगा? It is 3.18 upon 12 into 1. 3.18 upon 12. आंसर ए है ना? C. C है. Oxygen पूछा है. 1.06. Sir, अच्छा, 1.06. Atoms पूछा है. The number of moles of oxygen atoms पूछा है. So उसको फिर से क्या करना पड़ेगा? जो भी आंसर आता है, you need to multiply that by 4. Right? So Yes, sir. इसको 4 से आई थिंक ऑप्शन ए को 4 से मल्टीप्लाई करने से C आएगा. Yes, sir. Yes, sir. आई थिंक. ओके, ठीक है. Yes, sir. ओके, सो आंसर इज सी. यहाँ पे आंसर इज बी. इफ यू हैव एनी डाउट इन 5th, यू मे आस्क मी. और ये जैसा अभी किया है ना वैसा ही करना है. एंडिंग में आपको ये पूछ रहे in moles of NH4 thrice PO4 में ऑक्सीजन एटम्स कितना है. So first get the moles of NH4 thrice PO4, then multiply that by 4. Okay, ठीक है. Okay, thank you everyone. Thank you. Thank We you, will sir. meet in the next lecture. Thank you, sir. Bye.